Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshikha Gandhi and the topic that I'm taking for today's video is treatment of cash and trade discount in journalizing the financial transactions. So first entry says goods sold to Aman 25,000 rupees at 20% trade discount. Here we need to remember that trade discount is never shown in the books of accounts. So here we can see the sales that is made is 25,000 rupees. Trade discount is 20% on 25,000. So it comes to be 5,000. That means 20% of 25,000. Now you have to calculate the amount of sales after trade discount. That is 25,000 minus 5,000 equals to 20,000. Now this 20,000, that means amount after calculating or after subtracting trade discount will go to the journal entry, that means books of accounts. So the journal entry that we will be having will be cash account debited to sales account 20,000 rupees. Whereas in the narration you can mention that you have received a trade discount of 20%. Second entry says bought goods from Kishore 80,000 rupees at 20% trade discount and 2% cash discount. Whole payment was made immediately. So here we can see that we have both types of discounts included, that is trade discount and cash discount. So we will be doing it step by step so that you get clear understanding of the same. First of all, calculate purchase after trade discount. ट्रेड डिस्काउंट हमें यहाँ पर गिवन है 20% ऑन द परचेज अमाउंट. परचेज अमाउंट है 80,000 रुपीज़. सो 80,000 का 20% होता है 16,000. दैट मीन्स परचेज अमाउंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इज 64,000. And since we know कि trade discount is not shown in the books of accounts, purchase account will be debited with 64,000 rupees only. ये जो 16,000 का trade discount है वो हम books of accounts में that means journal entry में show नहीं करेंगे. आप purchase account को यहाँ पर debit करेंगे 64,000 rupees से जो हमने step 1 में calculate किया है. Second step is calculation of cash discount. कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दैट मीन्स जर्नल एंट्री में शो किया जाता है. सो कैश डिस्काउंट आप कौन से अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे? द अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था 64,000 रुपीज़. सो 2% कैश डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे 64,000 रुपीज़ पर, विच कम्स टू 1,280. सो डिस्काउंट अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा बाय दिस अमाउंट दैट इज 1,280. Last step of this journal entry will be you have to calculate the cash you have actually paid for the purchases. So आप इसमें अमाउंट लेंगे जो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद बचा है. दैट मीन्स 64,000 रुपीज़ जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था. दैट मीन्स एक्चुअल परचेज अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 64,000 रुपीज़ माइनस जितना आपको कैश डिस्काउंट मिला है जो इस क्वेश्चन में है 1,280 रुपीज़, एंड it gets you the final cash you will be paying for the purchase, that comes to 62,720 rupees. So cash account will be credited with this amount because this is the actual cash which is going out of the business for making the purchases. Hence the journal entry becomes purchases account debited 64,000 rupees जो हमने step 1 में calculate किया था. That means actual purchase amount minus trade discount. After that to cash account with 62,720 रुपीज़ जितना कैश बिजनेस से बाहर गया है फॉर दिस परचेज. टू डिस्काउंट अकाउंट जितना आपको कैश डिस्काउंट मिला है दैट इज 1,280 रुपीज़. In narration you can mention that you have received trade discount and cash discount both. Now this entry says bought goods from Kamal 80,000 rupees at 10% trade discount, 5% cash discount. लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दिया गया है. हमने परचेज के टाइम पर सिर्फ 70% पेमेंट दिया है, बाकी 30% आप 30 डेज के अंदर देने वाले हैं. सो हेयर द कैलकुलेशन विल चेंज अ बिट बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग द एंटायर पेमेंट राइट अवे. सो लेट्स सी हाउ टू पास दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री. सबसे पहले टेक द परचेज अमाउंट दैट इज 80,000 रुपीज़.
Trade discount will be 10% on this, that comes to 8,000 rupees. So purchase after trade discount is 72,000 rupees. So like we have done before, purchase account will be debited with 72,000 rupees since we know trade discount is not shown in the books of accounts. So purchase account को आप debit करेंगे 72,000 rupees से. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट कैश परचेज, बिकॉज आपने पूरा का पूरा पेमेंट उसी टाइम नहीं किया है. आपका कुछ अमाउंट कैश परचेज है, कुछ अमाउंट आपका क्रेडिट परचेज है. आप सिर्फ 70% ही कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं. सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट द कैश परचेज दैट यू हैव मेड, दैट इज 70% ऑफ द. नाउ कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज. 72,000 का 30%, क्योंकि 70% आपने पेमेंट कर दिया है, 30% बाकी है, सो वो 30% होता है आपका क्रेडिट परचेज, विच कम्स टू 21,600. कमल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट, दैट इज 21,600, बिकॉज ये आपका क्रेडिट परचेज है. नाउ कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट यू हैव रिसीव्ड. हाउ विल यू कैलकुलेट इट? टेक द अमाउंट ऑफ कैश परचेज विच इज 50,400. कैश डिस्काउंट आपको गिवन है 5%, सो 5% ऑफ 50,400 कम्स टू 2,520. दिस इज द अमाउंट विद विच द डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड. लास्ट स्टेप, बिजनेस से कितना कैश बाहर गया है, आप कैश अकाउंट को कितने पैसे से, कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट इट? टेक द अमाउंट ऑफ टोटल कैश परचेज जो है 50,400 रुपये, minus cash discount you have received, that is 2,520 rupees, and the actual cash going out of the company is 47,880. Finally, the journal entry becomes purchases account debited 72,000 rupees. That means purchase amount after subtracting trade discount. To cash account, जितना cash actually business से बाहर गया है 47,880. टू डिस्काउंट अकाउंट, जितना आपको कैश डिस्काउंट मिला है, विच वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्टेप्स, 2,520. टू कमल अकाउंट फॉर द क्रेडिट परचेजेस मेड. क्रेडिट परचेज कितना है आपका? 30% ऑफ द एंटायर परचेज आफ्टर कैलकुलेटिंग ट्रेड डिस्काउंट, दैट कम्स टू 21,600. In the narration you can mention that you have received cash discount and trade discount and the purchases made partly in cash and partly in credit.